Hello everyone, welcome to EduTap and a warm welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, as part of which we'll be doing 15 MCQs a day on various topics, and currently we are doing it on labor laws, and as part of today's session we'll be covering the Factories Act 1948 part 2. Part 1 हमने already किया है, part 2 हम इसमें करेंगे. Now, why these topics are important? See, when you look at the previous year papers, close to 15 questions out of 120 are asked in APFC or EO or AO examination from these components, which actually is a very good number. Moreover, these are high scoring potential questions or the topics कि एक बार अच्छे से करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है, एंड दूसरा वेटेज भी हाई है इनका. सो ऑल दोज हु आर preparing for either APFC और AO और EO एग्जाम, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस सेशंस, ओके, क्योंकि इसमें हम लोग टॉपिक्स का जो भी कंटेंट है दैट ऑल वी आर कवरिंग द फॉर्म ऑफ MCQs. ओके, तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द UPSC EPFO नोटिफिकेशन वेरी सून. सो ये सब आपके लिए बहुत ही यूज रहने वाले. सो डोंट मिस आउट ऑन दीज सेशंस. So moving on to the first question of this session. See, consider the following statements regarding the provisions for drinking water and sanitation, जो latrines है या फिर urinal facilities है उनके बारे में, and along with that spittoons also. Okay, under the Factories Act 1940, which of the following statements given here are true? Okay, now in factories with over 250 workers, cooling arrangements for drinking water are mandatory during hot weather. Yes, this is true, and ये कंपलसरी है, उनको करना चाहिए. Latrine and urinal facilities and factories must always be kept clean and sanitary, obviously, with separate accommodations for male and female workers. अलग अलग होने चाहिए जो भी टॉयलेट फैसिलिटीज़ है. Along with that, अगर वो टॉयलेट या फिर जो भी फैसिलिटीज़ है, इफ़ दे आर अप टू हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर, जो हाइट में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्मूथ पॉलिश्ड सर्फेसेस एंड मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, everything has to be done thoroughly. Drinking water points should be located within 6 meters of the contaminants, provided the factory manager approves it. No, वो 6 meters के बाहर ही आना चाहिए. जहाँ पे भी contaminants, मतलब जो फैक्ट्री के वर्क की वजह से जो contaminants आ सकते हैं, अगर उस तरह का कोई चांस है तो डेफिनेटली वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स आउटसाइड 6 मीटर्स होना चाहिए. अगर इंस्पेक्टर अगर उनको लग रहा है कि उसमें वहाँ कंटेमिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, इन सच केस दे कैन, बट अगेन दैट इज ऑन द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर ओनली. Okay, so here only 1 and 2 are correct, not the third one. Along with that, स्पिटून्स होने चाहिए फैक्ट्री में, एंड जो भी स्पिटिंग वाला है दैट शुड बी प्रोहिबिटेड कम्प्लीटली इन द प्रेमिसेस. एंड जहाँ पे भी अगर स्पिटिंग वाला आदत है लोगों को तो वहाँ पे definitely they have to use the spittoons. Violators who violate this rule can face a fine up to 5 rupees as per this act. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provisions for machinery safety under the Factories Act 1948. Now, which of the following statements given below are true, or that is are true? So, in this case, when we look at section 22 and 21, wherein fencing of machinery and cleaning of the work or cleaning of the machinery in motion. So, in that case, what are the precautions that need to be taken? See, all machinery in a factory must be securely fenced with appropriate safeguards to prevent accidents. Obviously, जहाँ पे भी machinery use हो रहा है, definitely there has to be various precaution that needs to be taken. One of that is the fencing, and yes, this is true, that has to be done. ये section 21 में आता है. Now, only trained adult male workers appointed by the factory are permitted to work on or near the machinery in motion during inspection. That's true, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं एंड देन वो उस तरह के स्पेसिफिक क्लोथिंग में रहते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ विच ओनली males are allowed there, trained adult male members are allowed there.
women workers are permitted to clean or lubricate prime movers or transmission machinery in motion if they are adequately trained. No, women and young persons, as per the definition that we have already discussed in the earlier session, they are not allowed to clean or lubricate prime movers or transmission machinery in motion. No, this is not true. This is false. So only 1 and 2 are true. That is A is the correct answer in this case, as per the section 21 and 22 of the Factories Act 1948. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provision on employment of young persons, emergency power cutoffs and self-acting machines under the Factories Act 1948. Of which of the following statements are correct? So here we are talking about section number 23, wherein employment of young persons on dangerous machines. Section number 24, striking gear and devices for cutting off power, which is very much required, especially where electrically powered factories are there, and self-acting machines, those which work by themselves once they own it. So here young persons can be employed on dangerous machines only after receiving proper instruction on risks and precautions, as well as adequate training or supervision. That's true, they can do, but again that should be under strict supervision of an experienced professional. Okay, so this is true. Power cut-off devices are only required in workrooms with machinery powered by electricity. No, जहाँ पे भी electrically powered factories है, so उस कंडीशन में हर एक वर्क रूम में पावर कट ऑफ डिवाइसेस होना ज़रूरी है. इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंसेस इमीडिएटली पावर कट ऑफ कर सकते हैं किसी भी वर्क रूम से. सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. सेल्फ एक्टिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड बिफोर द एक्ट, ये एक्ट से पहले अगर कुछ है इंस्टॉल्ड है, दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इफ दे रिसीव सेफ्टी अप्रूवल फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर. That's true, but their parts or material should not traverse within 45 centimeters of fixed structures where people pass. So जहाँ पे जैसे एक मशीनरी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर पे फिक्स्ड है एंड यहाँ से वो काम कर रहा है सेल्फ एक्टिंग मशीन, सो इट शुड नॉट, यहाँ पे पैसेज है, सो इनके बीच में एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर्स के ऊपर ही होना चाहिए डिस्टेंस. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इन दिस केस 1 and 3 आर ट्रू, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the provisions under the Factories Act 1948. Which of the following statements given is or are correct? Any revolving component such as set screws, bolts or keys must be effectively guarded to prevent any danger, either by encasing them or sinking them. थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर कुछ केस लगा सकते हैं, सो दैट उसकी वजह से किसी को कोई डेंजर या इंजरी ना हो. सो दिस इज ट्रू. Okay, and this again is under the section 26, casing of any new machinery. Women and children are completely prohibited from working near cotton openers with no exception. See, cotton openers क्या है, बड़े बड़े टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में जो कॉटन पहले उसको और फ्लफी बनाने के लिए, उसको लिंट वो सब सीड से अलग करने के लिए बड़े बड़े मशीनरी यूज़ करते हैं. ओके, एंड वहाँ पे यस, वुमेन और चिल्ड्रन आर नॉट, दे आर प्रोहिबिटेड वर्किंग नियर देम बिकॉज नो, बच्चों को तो उनको पता नहीं, बच्चे मतलब यंग पर्सन इन दिस केस, नॉट चाइल्ड लेबर. ओके, वुमेन क्या है, उस हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो ड्रेसिंग हम लोग करते हैं उसकी वजह से कभी कभी हो सकता है कि उसमें फंस जाए साड़ी ऐसे कुछ, सो दे ट्राई टू अवॉइड दैट. बट इफ अगर वो जो मशीनरी है उसके लिए अलग सा रूम है, मतलब जहाँ से कॉटन ओपनर, जिसमें से कॉटन फीड करते हैं, वो फीडर नहीं है एंड फीडर एक रूम में है एंड बाकी कॉटन वाला जो फ्लफी कॉटन जो निकलता रहता है वो अलग रूम में है, वो मशीनरी मतलब उसी का पार्ट है, ओपनर का ही, उस तरह से है, तो देन दे कैन अलाउ द वुमेन टू वर्क इन दैट केस. अदरवाइज ए स्ट्रिक्ट नो नो, अ बिग नो नो टू द वर्किंग ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन देयर. सो एक्सेप्शंस है, सो दिस इज फॉल्स. Lifting machines and tackles must be examined by a competent person every 12 months and the working load must be prominently displayed. अगर मशीनरी का किस तरह से हो रहा है काम and all that, regular maintenance, everything and expert examination should be done every 12 months so that उससे कोई untoward incident ना हो फैक्ट्री में. Okay, so here in this case B 1 and 3 are the true, so here B is the correct answer.
So moving on to our next question, consider the following statements regarding the provisions under the Factories Act 1948. Which of the following statements are true? So here in grinding factories, it is mandatory to display notices specifying the maximum safe working speed of grindstones और abrasive wheels. जहाँ पे grinding stones काम पे है या फिर abrasive wheels काम पे है as part of the machinery in any factory, वहाँ पे वो कितने स्पीड से रोटेट होना है एंड क्या क्या केयर लेना है, everything has to be mentioned thoroughly as part of display notices. And yes, this is true. The state government can prescribe rules to limit the maximum weights that workers of different categories may be required to lift, carry or move. So here also yes, when it comes to वेट्स एक्सेट्रा एक लिमिटेशन होती है. स्पीड है तो उसका स्पीड का भी एक लिमिटेशन होती है. सेफ्टी मेजर्स जैसे यहाँ पे है रोटेशन ऑफ द व्हील्स, उसका कितने टर्न्स होना चाहिए, क्या क्या केयर लेना चाहिए, वो भी होता है. एंड येस, रूल्स कैन बी सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द मैक्सिमम वेट्स फॉर लिफ्टिंग, कैरिंग, मूविंग लोड्स बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्रोटेक्टिव equipment such as screens or goggles is only required in processes involving excess light exposure. No, जहाँ पे भी ग्राइंडिंग होती है, जहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ फ्रैगमेंट्स कुछ जनरेट हो रहे हैं एज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच कैन फ्लाई ओवर, इन सच केसेस ऑल्सो वहाँ पे भी स्क्रीन्स या गॉगल्स बहुत ज़रूरी है. सो इन बोथ द केसेस, जहाँ पे भी एक्सेसिव लाइट एक्सपोजर होता है वहाँ पे भी, एंड जहाँ पे भी पार्टिकल्स, श्रेड्स या फिर फ्रैगमेंट्स एज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर वहाँ का प्रोसेसिंग में उड़ने के चांसेस है, वहाँ पे भी गॉगल्स चाहिए, गॉगल्स या फिर स्क्रीन. सो हियर ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर. सो दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर हियर. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the safety measures of factories under the Factories Act 1948, and based on which you have to tell me which of the following statements are true. Okay, now here workers cannot enter confined spaces in a factory unless those spaces are equipped with manholes or other effective means of egress. एंड येस दैट इज़ ट्रू. जैसे कुछ चेम्बर्स है, बहुत कन्फाइंड स्पेसेस है, वहाँ पे अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे गैस या फिर फ्यूम वेपर या डस्ट वो होने के चांस रहता है. सो अनटिल एंड अनलेस effective means of egress, that is removal, are there in such cases, the persons or the workers cannot enter such confined spaces in any case. So yes, this is true. Portable electric devices with voltage exceeding 24 volts are strictly prohibited in all factory environments. It is prohibited, no doubt, क्योंकि फायर कैच होने के उन सब के चांसेस रहते हैं, बट इफ़ प्रॉपर सेफ्टी डिवाइसेस है, इफ़ प्रॉपर फ्लेम प्रूफ लैम्प्स या फिर लाइट्स है, ऐसे कुछ है, तो डेफिनेटली दे कैन बी यूज्ड. सो विथ सम प्रिकॉशंस एंड रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी है वहाँ पे ये सारे प्रिकॉशंस के साथ वोल्टेज electric devices with voltage exceeding 24 volts can be used, portable devices especially. So this is false. Sorry. The chief inspector has authority to mandate additional fire safety measures if the existing provisions are deemed inadequate. See, कई बार ऐसा होता है कि as per the section 38 जो state government है that establishes the fire safety rules in factories and some specific categories, but अगर लग रहा है कि वहाँ पे और भी extra care लेना चाहिए, okay, in such cases chief inspector has complete authority to mandate additional fire safety measures if he feels that the existing measures are inadequate or insufficient in that particular circumstances. So definitely this is true. So here 1 and 3 only are true. So A is the correct answer. So coming to the next question. In factories where at least 1,000 workers are ordinarily employed or where certain manufacturing processes involve risks to health, safety or well-being of workers, which of the following statements regarding the appointment of safety officers is correct? Now अगर state government mandate करता है तो definitely that particular establishment or the factory they have to employ a safety officer. Now safety officer का role क्या होता है, जो safety measures है वो check कर लेता है. He or she ensures compliance with the regulations and this will enhance the worker safety and all that. So for which
it is required. So here the occupier must employ safety officer if required by the state government. अगर वो mandate करता है तो definitely they have to go for the appointment of a safety officer through an official notification. एक official notification निकाल के उसके हिसाब से उनको hire कर सकते हैं. So coming to the next question. Which of the following statements regarding the constitution and functions of the Site Appraisal Committee is correct? Now, Site Appraisal Committee क्या है? That will evaluate applications for establishment or expanding factories with hazardous process. बहुत careful होगा तो they have to do that. And who appoints them? The state government forms the Site Appraisal Committee. Okay, now ये committee में कौन कौन रहता है? It includes chief inspector of the state as a chairman, and there would be representatives from the central board for the prevention and control of water pollution. Central board से ही एक और member रहेगा for prevention control of air pollution. Representative रहेगा state board का भी, कोई वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट का अगर कोई बंदा है तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं. स्टेट बोर्ड का ही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन से भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. ऐसे एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड एक्सपर्ट ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड वो भी एज अ मेंबर इस टीम में रहेंगे. एंड दे विल check, they will inspect the process and किस तरह का हैजार्डस मटेरियल वो कैसे यूज कर रहे हैं. उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बंदा भी इसमें मेंबर होता है इस कमेटी में. सो ऑन द होल अगर जहाँ पे भी हैजार्डस प्रोसेसेस होंगे इन द फैक्ट्रीज, whether they are establishing them or expanding them, definitely this appraisal committee, site appraisal committee would be established with all these members and that would work out. So in this case the committee has 90 days to examine an application for the establishment of a factory involving hazardous process and make its recommendations to the state government, whether yes or no. अगर yes है तो अगर कुछ और इनके conditions है तो वो भी उसमें वो डाल सकते हैं. So here B is the correct answer. Members कौन है, chairman कौन है, ये हमने discuss कर लिया. The committee consists of only representatives. No, everything, both. And the site appraisal committee is not required to have an expert in occupational health hazard member. No, that also is there. So this is, all these are false. This is only true. So B is the correct answer in this case. So coming to the next question, there is a statement. Now you, after reading that, you have to tell me which options are best suited to that statement. So here, as per the statement, it goes like this. The Factories Act 1948 mandates factories to provide various facilities for the welfare of workers, including washing facilities, storage and drying facilities for clothing, sitting arrangements and first aid appliances. Now, which of the following statements regarding the facilities is or are correct? First, factories are required to provide only washing facilities and first aid appliances. No, drying facilities भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी वर्क होता है कई बार वॉश करना पड़ता है क्लोथिंग को. सो वेट वो कपड़े कहाँ सुखाना है, ड्राइंग ऑप्शंस and washing options, sitting arrangements, first aid appliances, everything they have to maintain. So this is false. The state government may exempt certain factories from providing storage and drying facilities for clothing. It's not like that. उनको basically वो provide करवाना चाहिए होगा. So this is also false. In factories, for every 150 workers, there must be at least one first aid box or cupboard available. And factories employing more than 500 workers, they must have an ambulance room. This is very much true. Okay. Suitable arrangements for sitting are required to be provided only for workers who are obliged to work in a standing position for more than 4 hours at a stretch. ऐसा कुछ नहीं है. Seating arrangement should be provided to the workers so that जो humane conditions है that should be maintained as part of the working conditions or the working environment as per the Factories Act 1948. So this is also false. So only C is true in this case. So C is the correct answer. So moving on to our next question. With reference to the provisions for working hours and weekly holidays under the Factories Act 1948, consider the following statements. No adult worker shall be required to work more than 48 hours in a week. Okay. Yes, this is true. As per section 51, this works. And a weekly holiday can be substituted, but no worker shall work more than 10 consecutive days without a full day of rest. Week में जो सबसे पहला दिन होता है, that is Sunday, that should be always a holiday.
ओके अगर बाय चांस कहीं पे हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कि काम ज़्यादा आ गया एंड देर इज़ नो अदर सब्सटीट्यूट, तो कभी कभी थोड़ा सा लंबा भी वर्क डेज हो जाते हैं, मतलब वर्क वीक हो जाता है, बट इन दैट केस ऑल्सो 10 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ 1 day ऑफ फुल रेस्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू. If a worker loses their weekly holiday due to exemption from section 52, वही जैसे कभी काम ज़्यादा आ गया है, वर्कलोड है या फिर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इन सच केसेस कंपेंसेटरी हॉलीडेज मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन द सेम मंथ और द फॉलोइंग मंथ कंपल्सरीली. दैट वर्किंग डे ऑफ के दिन वर्क कर रहे हैं तो कंपेंसेटरी हॉलीडे नेक्स्ट उसी मंथ में या फिर फॉलोइंग मंथ में उस पर्टिकुलर वर्कमैन को देना ज़रूरी है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. Okay, especially under section 52. So friends, here comes the next question based on sections 54 and 55. So with reference to the working hours and rest periods, okay, for adult workers under the Factories Act 1948, consider the following statements. No adult worker shall be required to work more than 9 hours any day. This is very much true. Adult workers must be given at least half an hour rest interval after working for 5 hours, extendable to 6 hours with state government exemption. जहाँ पे भी ज़रूरत है 5 hours में एक 5 hours के बाद हाफ एन आवर तो ब्रेक होना चाहिए. अगर state government exempt करता है then that can be extended to 6 hours but not more than that. Yes, this is also true. The daily spread over period including rest intervals cannot exceed 10.5 hours. कई बार ऐसे ओवर टाइम ऐसे कुछ करना पड़ता है, पहले हमने देखा 9 hours से ज़्यादा नहीं कर सकते, बट अगर स्प्रेड ओवर भी हुआ है तो दैट कैन नॉट बी मोर देन 10.5 hours. ओके, बट इफ द चीफ इंस्पेक्टर में एक्सटेंड इट टू 12 hours विथ रिटन जस्टिफिकेशन, अगर कुछ जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि हम लोग उनको बीच में अच्छे से रेस्ट दे रहे हैं या फिर ये मिनिमम टाइम के लिए मतलब कुछ ही दिनों के लिए होगा या वीकली वंस और ट्वाइस ऐसे होगा विथ प्रॉपर कंपेंसेशन एंड ऑल दैट, अगर सही से उस तरह का जस्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, बट अगेन बेस्ड ऑन द इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर्स decision only. So this is also true. So in this case 1, 2, 3 all are true. So D is the correct answer. Moving on to our next question. A worker in a factory works for 10 hours a day for 6 days a week. What is a worker entitled to according to the act? Now, as per the section 59 of the act, wherein extra wages have to be paid for overtime, it says that if a worker in a factory works for more than 9 hours in any day or exceeds 48 hours in a week, then they are entitled to overtime wages at a rate twice their ordinary wage rate. जो भी उनका regular wage rate होगा उससे उनको डबल मिलेगा. सो हियर इन दिस केस 10 hours a day मतलब जो 9 hours है उससे ज़्यादा किया है and greater than 9 hours a day and it is greater than 48 hours per week, that is 6 days. So obviously overtime wages at the rate twice their ordinary wage rate should be paid to that worker. Moving on to our next question. With reference to the provisions under the Factories Act 1948 regarding young persons, consider the following statements. These are as per the section 67 and 68 of the act, where prohibition of employment of young children, section 67 बोलता है and 68 बोलता है कि non adult workers जो बच्चे मतलब adolescents है 14-15 years to 18 years वालों को किस तरह से वर्क देना चाहिए. So here children below the age of 14 years are prohibited from working in any factory. That's true. So this is very much true. Adolescents with a valid certificate of fitness are deemed adults for factory employment. Yes. अगर adolescents है that is 15 to 18 years but they have got a fitness certificate granted, then they can work. जो adults की तरह काम है वो कर सकते हैं. So this is also true. A male adolescent under the age of 17 years or a female adolescent cannot work in a factory outside the hours 6 a.m. to 7 p.m. outside of only यही टाइम पे उनको काम कर सकते हैं. अदर दैन दिस दे कैन नॉट वर्क. नाइट टाइम वर्क करना या अदर दैन दिस टाइमिंग्स करना मेल एडोलेसेंट अंडर द एज ऑफ 17 that is 15 to 17 years and female adolescent that is from
15 to 18, they can't work under this case. So this is also true. So here D, 1, 2, 3 are true in this case. Moving on to our next question. So here I'll give you a statement. As per the statement, you have to tell me which of the following options is true. So according to the Act, children are entitled to certain protections and restrictions regarding their working hours. Which of the following statements is or are correct regarding the working hours of children? So please kindly understand, children means 14 years age के अंदर नहीं है. It is above 14 years, that is 15 to 18 years. So young force, that you can say young workman. So वो यहाँ पे mentioned है. As per that they used the word children, so हम भी यहाँ पे ऐसे use कर रहे हैं. Okay. So children can work for more than 4.5 hours a day if they are employed in a factory that operates only during daytime. It is not work more than, it is less than. They cannot work for more than 4.5 hours a day. So this is false. Children are forbidden to work at night, which is defined as a period of at least 12 consecutive hours, including interval between 10 p.m. and 6 a.m. Morning 6 a.m. to evening 7 p.m. तक वो काम कर सकते, but not during the night time, and this is very much true. Female children can work in a factory at any time. No, they can't work in the night. Daytime also only 2 shifts में वो काम कर सकते हैं, which does not exceed 5 hours each. So this is false. Children can work in multiple factories on the same day. No, उस तरह से वो नहीं कर सकते हैं. This is false. So here only B is the correct answer. B is the true statement, मतलब correct statement. So B is the correct answer here. Coming to the next question. Again here I'll give you a statement, and according to the options you have to tell me which is the correct statement, correct option. According to the Act, that is the Factories Act 1948, factory workers are entitled to annual leave with wages. Which of the following statements is or are correct regarding the eligibility and calculation of the annual leave? A factory worker who has worked for 200 days or more in a calendar year is entitled to leave with wages in the following year. This is partially true. Why? Because it is not 200 days but 240 days or more. Okay. So this is false. An adult worker is entitled to 1 day of leave for every 20 days of work performed in the previous calendar year. So this is true. And if it comes to the children or that is young force, then it would be 1 day leave. They are entitled to 1 day leave for every 15 days of work performed in the previous year. Okay, जो annual leave होता है. So this is true. A worker whose service commences on the 15th of January is not entitled to leave with the wages in the same calendar year. It's not like that. अगर 2/3 of the days, total number of days, he has worked in the remaining days of the calendar year, so definitely he or she will be eligible for the leave, that is leave with wages in the next year, in the same calendar year. So this is also false. Okay. A fraction of leaves of less than half a day is considered as a full day's leave. A fraction of leaves of more than half a day leave, if अगर half day से ज़्यादा है उनका leave, then fraction में मिला के then that would be considered as full day. अगर fraction में लेके वो less than जैसे hours okay होता है, so उसे less than half day हो रहा था, that will not be considered as a full day leave. So this is also false. So here only B is the correct answer. So B is the correct answer here. So coming to the next question, again from the same section 79, annual leave with wages. According to the Act, factory workers are entitled to carry forward unused annual leave. That's true. Which of the following statements is or are correct regarding the carry forward of unused annual leave? Yes. See, adults can carry forward up to 30 days of unused leave, while children can carry forward up to the same number. No, this is not true. Adults can carry forward 30 days, and children, that is young persons, they can carry forward their leave if not utilized to 40 days. Okay. up to 40 days तक वो next इसमें कर सकते हैं. So this is false. There is no limit to the leave that can be carried forward if a worker applied for leave but was refused. This is very much true. अगर उसने worker के पास leaves है but फिर भी उसने apply करने के बाद उसको deny किया गया है, in that case जितने भी leaves accumulated हुए हैं that can be carried forward. Okay.
वर्कर्स कैन कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years. 2 years तक नहीं, दिस इज फॉर 3 years तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं. Okay, a worker can request leave in writing form from the factory manager of at least 15 days before the desired leave start date. For those in public utility services, this notice period is extended to 40 days. This is not for 40 days, but it is extended to 30 days. Okay, so this is also not true. So only B is true. That is a true option here for the statement given in the question. Moving on to our next question. So how the wages are paid during the leave period? So here under section 80 of the Factories Act 1948, which of the following components are included in the calculation of the wages for the worker during their leave period? Dearness allowance, that is DA, cash equivalent of benefits from discounted food grains. कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे food grains PDA से नहीं मिल रहा है, so they'll give some cash. वो overtime wages paid during the preceding month, उससे पहले जो ओवरटाइम वेजेस है वो बोनस पेड, अगर बोनस कुछ है लास्ट टाइम जितना पे किया उतना. सो इन दिस केस ओनली 1 and 2 आर ट्रू, ओवर टाइम एंड बोनस पेड इफ एनी, जो प्रीसीडिंग इन द प्रीसीडिंग मंथ, क्योंकि इस टाइम तो किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी पेड फॉर द लीव पीरियड. ओनली द डियरनेस अलाउंस, कैश एंटाइटलमेंट एंड द रेगुलर वेजेस जो है बस उतना ही, जो वो भी उनके एवरेज डेली अर्निंग्स जो है वही उनको मिलेगा. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है सेशन 1. अब इसी का कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे अगले सेशन में. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि currently at EduTap they are offering 3 courses for those students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO APFC and EO or AO examination. So for which they are offering 3 courses. उसमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स. ओके, ये उन बच्चों के लिए सही है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन एंड दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, लाइक द कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव सेशंस, कुछ डाउट क्लियरेंस के लिए, वो सब इसमें मिलेगा. एंड इवन एवरी वीक थर्सडे के दिन कुलदीप सर आपको खुद ऑनलाइन आपका क्लास लेंगे, देर वेर इन ही विल टेल यू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द कोर्स. अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब वो क्लैरिफाई करेंगे. दूसरा कोर्स है 2 टेस्ट सीरीज प्लस. ये उनके लिए है जो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स का कंटेंट उनको चाहिए एक्सक्लूसिवली, वो प्लस सम उनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब उनको मिलेगा. मतलब जो ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने पढ़ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए उनको हेल्प चाहिए. नाउ थर्ड कोर्स है टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब अपने खुद के सोर्सेस से, बट नाउ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड, फॉर विच दे नीड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्टिंग देमसेल्व्स, टेस्ट that is mock test etc. So for them this test series would be of great help. And if you have any queries related to any of these courses, you can reach out to the team members, any of the team members from EduTap, and accordingly you can make an informed decision कि कौन सा कोर्स आपको लेना है. Thank you very much. Hope you have liked this session. See you all in the next session.